All right. चलिए, good luck. Shall I start, ma'am? Yes. First, who will present? Ma'am, Neha. Okay. No, ma'am. Actually, मैं introduce कर रही हूँ. उसके बाद first topic नेहा describe करेगी. Okay. Good afternoon, respected ma'am and my dear friends. Today I will present. No, ma'am, on है. I can't see you. Roll number 5, right? Yes, ma'am. Camera on है, ma'am. पता नहीं, आप दिख ही नहीं रहे. No, ma'am, मेरा मोबाइल में स्क्रीन भी विजिबल नहीं है. पता नहीं सुबह से ही खराब हो गया है. अच्छा, पता होगा ना मोबाइल को आज प्रेजेंटेशन है आपका. No, मैम ऐसा नहीं है. सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं. चलिए, ओके. कैमरा ऑन है लेकिन मेरा, मैम. All right, proceed. Good afternoon, respected ma'am and my dear friends. Today I will present a PPT on the topic of environmental appraisal. Now I will introduce my team members: Neha Kumari, Sanna Kumari, Manisha Kumari, me Aradhya Kumari, and Vikram Vishal. The first topic, that is definition and importance of environmental appraisal, will be explained by Neha. Good afternoon, ma'am. My name is Neha Kumari, and my topic is what definition of environmental analysis and importance of environmental analysis. Hello? Yes. William F. Gluck defines environmental analysis consists of decision made to react, to anticipate or ignore environmental cues. Environmental analysis is a process to identify all the external and internal factors which can affect the organization's operation. Kotler calls external environmental analysis as opportunity and threat, and internal environmental analysis consists of strength and weakness. Importance of environmental analysis: to identify the strength and weakness, to identify the opportunity and threats, to optimum use of resources, to its help to deal with changes, its help in effective decision making, to growth and survival. And thank you. And next topic explained by Sanjana. Good afternoon, ma'am. My name is Sanjana Kumari, and my PPT topic is type of environmental appraisal. There are two types of environmental appraisal: internal environment and external environment. Internal environment is component of business environment, which is composed of various elements present inside the organization that can affect or can be affected with the choice, activities and decision of organization. It is controllable environment, and some internal factors are cultures and value system, mission and objective, management structure and nature. Fourth one is human resource. Cultures and value system. Value system of the founder of organization have a lasting impact. Value system not only influence the working of the people, but also choice of the business. Mission and objective. The mission and objective guide the priorities, direction of development, business philosophy, and the business policy. Management structure and nature.
A structure is concerned with the hierarchical relationship and relationship between different structures, or like the top management. Human resource, it is concerned with factor it is concerned with factor it is concerned with factor like manpower planning, recruitment and selection, composition, communication and appraisal. Second, external environment. An external environment is uh, an external environment is composed of all outside factors or influence of all the outs that influence that impact the uh, operation of business. There are two types of environmental appraisal: macro environment and micro environment. Macro environment. The macro environment consists the factor external to the industry that may have a significant impact on the firm's uh, strategic. There we will look at a broad dimension. First, political environment, regulatory and legal environment, demographic environment, socio-culture, ecological and global environment, and economic environment. Second, my environment. All the actors of an organization. Sanjana, we can't hear you. Sanjana, can you hear me? She's there or not? Okay, she's not in the group only. Manisha, you can start next topic. Next slide. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Mr. Sharma. Today I will explain process of environmental appraisal. It is analysis of the environmental, makes the business aware of the threat opportunities in the organization. There are four stages: scanning, monitoring, forecasting, and assessment. First, scanning. It is the process of analyzing identification of emerging and ensuring same is the critical purpose of the environmental scanning. The main aim of environmental scanning is the alerting the organization of potentially significant external impingement before it has a fully formed and crystallized. Successful environmental scanning draws attention to possible change and even before their occurrence, allowing time for suitable action. The next point is monitoring. It entails prospective follow-up and the more in-depth analyzing of the relevant environmental trends identified at the scanning stage. The purpose of monitoring is to assemble sufficient data to make out whether certain patterns to emerge.
emerging. And the next point is forecasting. Forecasting is concerned with the development of plausible direction to direction, speed, scope, and intensity of environmental change to lay out the evaluatory part of anticipatory change in the environmental. And the next point is assessment. Assessment involves drawing of implications, possible impact. In assessment, the frame of reference is a matter of the focus of scanning, monitoring, and forecasting to identify what that understanding of environmental means for the organization. The next point will be explained Aradhya. Good afternoon, ma'am. My name is Aradhya Kumari, and today my presentation topic is factor of environmental appraisal and approaches of environmental appraisal. Let's start with the factor of environmental appraisal. Events, trend, issue, and expectation. The issue. First point is events. Events are important and specific occurrence taking place in different direction. Different environmental sector. Events are certain happening in the internal or external organization can be observed and tracked. Second, trends. Trends are the general tendencies or course of action along which events that take place. Trends are grouping of similar or related events that tends to move in given direction, increasing or decreasing in strength or frequency of observation, usually suggest a pattern of change in particular area. For example, customer behavior and technology use. Third one is issue. Issues are the current concern that arise in response to event or trends. Identify an emerging issue is more difficult. Emerging issues start with a value shift or a change in how an issue is viewed. Fourth one is expectation. Expectations are the demand made by interested group in the light of their concern of issues. And now explain about approaches of environmental scanning. First one is systematic approach, second is ad hoc approach, and third one is processed approach. Systematic approach. Under this approach, information for environmental scanning is collected systematically. A systematic approach involves development and implementation of such a system which ensure scientific and continuous collection of information for environmental scanning. Second one is ad hoc approach. Under this approach, an organization conduct special surveys or studies to deal with the special environment issues. Explain systematic once again. Okay, मैम सिस्टमैटिक अप्रोच एक ऐसा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है इन सिस्टमैटिक वे में, और ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन. Is it continuous? क्या मैम? Is this process continuous? यस मैम, इसमें कंटिन्यू. क्या ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, ये कभी कदार किया जाता है? मैम, आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. Okay, proceed. Okay, ma'am. Second one is ad hoc approach. Under this approach, an organization conducts a special survey and studies for deal with the environmental issues from time to time. Such type of surveys or studies conduct when the organization has to undertake a special project, evaluate existing strategy or new strategies. Third one is process from approach. Under this approach, the organization use information in a processed form available from various sources both inside and outside the organization. The information in processed form is usually supplied by government agencies, private institutes, and it engage in the processing of such information. Thank you. And further topic will be explained by Vikram.
Good afternoon, ma'am. Good Manisha, afternoon. share the PPT. Topic? Manisha, share the PPT. Manisha, can you hear? Neha, my name is Bikram Bisal. Good afternoon, ma'am. My name is Bikram Bisal. My today topic on business environment. First of all, I define business environment. Business environment is the process, important aspect of any business. The force which constitute the business environments are its supplier, competitors, media, government, and customers, economic conditions, and multiple other institutions working externally. So let us start the introduction to business environment and learn its importance. There are 4 points in their PPT. First, it helps to understand the internal environment. Second, it helps to understand the market condition. Third one's given the direction for growth. And fourth one, determine the opportunities and threats. Next slide. Second, my topic on nature of business environment. Business environment, it is the complex. It is in dynamic in nature. It is multi-faceted in nature. And for it is reaching impact, it is change in the environment, it's something development of difficult. First of all, and explain it is complex. The environment consists of on the factors, events, conditions, and influence arising the form of different sources, all the interact with which each other to create new set of influence. A dynamic, it is a modern technique and dynamic in nature's environment by its vary in nature and changing one and constantly. And third one's multifaceted, the same and investments that can be different effect on different industry. And fourth one, for reaching impacts, environment is the reaching for impacts in that the growth and profitability of an organization. Fourth one's change in environment can be change the competitive scenario. The general environment changing maybe the boundary of the industry and changing the nature of competitions. And last one, accuracy of the business environment, macroeconomics development such as the interest rate, fluctuations rate for inflation, and the exchange rate variation of inflation and changing. Thank you and have a nice day. Okay, now question is open. Whoever have to ask any question, you can ask. Is there any question that any point someone was not able to explain properly or have any doubt? No question. Okay, then you are free to ask any question then. Vikram and Neha, Sanjana, Manisha, Aradhya. Pick up any random one and ask question. First, I'll allow. Yes. Question to Aradhya. Acha, Arushi is there to ask question first. Listen to the question. Yes, ma'am. वो कुछ समझ में नहीं आता. Factor of इसमें factor of environmental scanning में 4 था ना event और second था 1 मिनट. Slide तो है नहीं, मैं screenshot ले हूँ 1 second में. Events trends. आप देख पाएंगे. Better share the screen. Someone share the screen and let us know over here only. Who is sharing? Bikram. Permission. One second. Okay. Ma'am, permission. Who is sharing? Vikram or Neha? Okay, Vikram is sharing. Which slide, Arushi? Aradhya, factor of environmental scanning. सारे पॉइंट नहीं सारे पॉइंट्स नहीं, उसमें जो लास्ट वाले पॉइंट था ना वो क्लियर नहीं हो पाया था. एक्सपेक्टेशन. हाँ, एक्सपेक्टेशन.
एक्सपेक्टेशन ये होता है, इसमें एक डिमांड होता है जो कि इंटरेस्टेड ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें इशू से कंसर्न किया जाता है। इसमें मतलब कि जो इशू होता है ना, उसको वो सर्च करते हैं, फिर उसके बाद फिर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, फिर वो लोग एक्सपेक्टेशन में होता है कि उसमें ग्रुप बनाया जाता है। That's it, Aradhya? क्या मैम? That's it? यस मैम। ओके, आप लोग टीम मेंबर हैं, अगर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बाकी मेंबर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Anyone else want to give clarification on this? No one? Okay, then ask question from them. Neha, Sanjana, Manisha, Radhya, and Vikram. Now you are free to ask question. See that whether your classmates were listening to you or not. Arushi proved that she was listening. She was listening. Okay. Other than that, you can ask. Understanding or not? Okay. सबसे पहले मैं बोलती हूँ नेहा, आप क्वेश्चन पूछिए. Neha, you are there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ask question from your fellow mates. अपने क्लासमेट से क्वेश्चन पूछिए. Next slide. Forecasting. क्या forecasting? हाँ. Explain करना है, Vikram. What is forecasting? Your question. Yes, ma'am. नाम पूछ. Vikram. विक्रम विशाल. अरे यार, विक्रम विशाल तो आपके ग्रुप की है ना, आप क्लास में से किसी से पूछिए, अपने टीम मेंबर से नहीं पूछना है. आरुषि से. अच्छा, आरुषि से ही पूछना है, पूछिए. मैम एक्चुअली क्या था ना कि नेहा फर्स्ट टाइम शायद बोली होगी, उसका हम लेट ज्वाइन किए थे 10 मिनट, इसलिए हम उसका ना पीपीटी उसका नहीं सुन पाए. ऑलराइट, किसी और का नाम? बताइए, जिसे दुश्मनी है उनसे पूछ लीजिए. नहीं है मैम. किसी से दुश्मनी नहीं है. नहीं मैम. इसीलिए पूछने में दिक्कत हो रहा है, सभी तो दोस्त हैं, किसको फंसाए, है ना? Yes, ma'am. Okay, I am telling you the name. Roll number 31. Who is this? Roll number 31. Yes, ma'am. Batch 2, roll number 31. Yes, ma'am. Okay. Question to you is, what is forecasting? Ma'am, it is basically a process in management by which we kind of gather the past information of the management, like whether in terms of sales or whatever expenditure we did or wherever we were going wrong. Basically, if we consider it is a past data we are collecting, is it? We collect the information which has already occurred, like in the past, and then we use it in the present as a method of it is what stands for forecasting. Is this forecasting? Forecasting का मतलब क्या होता है? Forecasting मतलब क्या, हम लोग past data को analyze करते हैं? To see the future, to see what it is a like actually ma'am, it is a method by which we see wherever we have gone wrong, so that we can take corrective measures and we can formulate it in the future. Rule number 37, batch 1.
Roll number 37, you are there? Yes, ma'am. Batch 2, ma'am. मैम मैं बताऊं? Yes, batch 2, no, batch 137. Okay, ma'am. Batch 137, you are not there? See? Roll 18, batch 1. Roll 18, batch 1. So this is how you all participate. Okay. So suggestion to you all is you have to work on your pronunciation. ठीक है? ये ग्रुप में आप लोग सब लोग बोले एक्सप्लेन किए, it was good, but many of you were not able to pronounce properly. ठीक है? जैसे कुछ वर्ड तो याद रहा, लास्ट में जैसे विक्रम का हुआ है. लास्ट स्लाइड आप देखिए विक्रम, लास्ट स्लाइड शेयर करिए. Okay, see this fourth point. How you pronounce this? Last slide, not this one. Okay, nature of business environment में ये fourth point जो है वो आप कैसे pronounce करते हैं? Vikram, you are getting my voice or not? Multifaceted. तो multifaceted face है ना वो? Face है, Yes, ma'am. multifaceted होगा pronunciation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. और कुछ Okay. वर्ड था तो सबको थोड़ा बहुत pronunciation में मुझे दिक्कत लगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं लगी. And what you all have to say on this? आप लोग का कोई ऐसा point as a suggestion? अभिषेक, you want to say something? फोरकास्टिंग एक बार क्लियर कर दीजिए ना, वो क्वेश्चन वो डाउट रह गया मेरा. मैम सजेशन ये था कि जैसे ये बोल रहे थे लोग तो एक फ्लो में नहीं था, रुक रुक के अजीब अजीब से आवाज में आ रहा था मैम. जैसे एक होता है कि फ्लो में बोलना, अगर आप पढ़े हो तो उसको एक्सप्लेन थोड़ा बेटर वे में ये लोग कर सकते थे मैम, फ्लो वाइज. याद आया जब आप उसमें जो थोड़ा आप बोल रहे हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल नहीं आप पुट किए. ठीक है, जैसे ये जो आरुषि का जो क्वेश्चन जहाँ पे था वहां पे एक पॉइंट था, स्लाइड शेयर करिए. वहां पे देखिए सबसे पहले क्या था, इवेंट. कोई सर्टेन इवेंट होगा, ठीक है. उसके बाद जो इशू आया, जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था मैगी का. ठीक है, मैगी का मैंने एग्जांपल दिया था और कहा था वहां पे क्या हो गया था, डाउट सबके दिमाग में कि इट इज नॉट सेफ. ठीक है, दैट मैगी इज नॉट सेफ. तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या हो गया था, इट इज नॉट सेफ. तो कस्टमर के दिमाग से वो चीज हटाना था, इस वजह से कंटिन्यूस ये एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा था कि मैगी आपका सेफ था, सेफ रहेगा. ठीक है, कस्टमर के दिमाग से वो जो डाउट था उसको क्लियर करने के लिए. ठीक है, बाद में टेस्ट में तो साबित हो गया ना, लेट नहीं पाया गया उसमें, है ना. तो ये चीज कस्टमर के दिमाग में कैसे घुसाए, तो ये बात थ्रू एडवर्टीजमेंट. ठीक है, तो इशू आया. ठीक है, मैगी में लेट था, दैट वाज एन इशू. एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर वाज व्हाट, इट इज नॉट सेफ. और फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको रिजॉल्व किया गया. ठीक है, सर्टेन इवेंट आया, उसके बाद कोई ट्रेंड चला, मतलब जो कंटिन्यूस कोई चीज चलता है तो वो ट्रेंड में आता है. फिर इशू, जिसको हम लोग कहते हैं कोई प्रॉब्लम अकर होता है, और लास्ट में फिर एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर के दिमाग में रह जाता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग. ठीक है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिलीवर करते हैं. अंडरस्टूड. तो यहाँ सब आप एग्जाम्पल भी थोड़ा थोड़ा पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे. ठीक है, क्लेरिफिकेशन के लिए. यहाँ पे एग्जाम्पल तो कहीं नहीं था. ठीक है, तो एक ये सजेशन होगा. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? मैम फोरकास्टिंग थोड़ा सा बस पता है कि अनुमान लगाना होता है. फोर क्या होता है, क्या होता है आरुषि, फोरकास्टिंग? उसमें ना अनुमान लगाना होता है कोई काम के पहले कि हाँ ये काम आगे सक्सेस होगा. सबसे पहले फोरकास्टिंग प्लानिंग से पहले का प्रोसेस है या प्लानिंग के बाद का प्रोसेस है, ये बताइए. प्लानिंग के पहले का.
वेरी गुड। पहले का उसमें हम लोग पास डेटा जो भी डिस्कशन कर रहे थे, पास डेटा से एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर एस्पेक्ट देखते हैं कि फ्यूचर में कितना स्कोप है हमारे लिए। ठीक है, जैसे अभी इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते थे अगेन, जैसे अभी हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अब पता चल रहा है कि ये कोरोना इफेक्ट आगे तक चलेगा, और अगर मान लीजिए खत्म भी हो जाता है, अभी इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग इतने मतलब विगरसली आ चुके हैं कि अब ये नीड है, मार्केट का ये जरूरत है। तो अब सिर्फ यही अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ही ले लीजिए, अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करते हैं तो इट इज थ्रेट फॉर यू। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करते, ऑनलाइन मोड में भी आप कंफर्टेबल अगर नहीं होते, इट इज अगेन थ्रेट फॉर यू। सो यू आर फोरकास्टिंग इट कि अभी फ्यूचर में इसका डिमांड, डिजिटल होने का डिमांड और बढ़ने वाला है। दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग एंड अकॉर्डिंगली यू विल प्लान। ठीक है, क्या प्लानिंग होगा? या तो जूम ऐप करेंगे, जैसे जूम पे अभी ये पेड वर्जन आ गया, ठीक है, लाइसेंस ले लिया गया, क्योंकि अभी और आगे डिमांड इसका और आगे बढ़ने वाला है, हम लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते थे इसमें भी। अंडरस्टूड? यस मैम। हम्म मैम हम्म मैम एक और चीज है, ये मॉनिटरिंग जो है ना, उसको भी एक बार क्लियर कर दीजिए। मॉनिटरिंग नहीं है ऋषि, मॉनिटरिंग हम ये मॉनिटरिंग क्या है मैम? वही मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये? मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग बोलते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। मॉनिटर करना, क्लास में, स्कूल में मॉनिटर होते थे आप लोग के क्लास में। यस मैम, जो हेड होते थे क्लास के। हाँ, तो उसका क्या काम होता था? देखभाल करना, बच्चे को शांत कराना। हाँ, नजर रखना। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही पूरा स्कैन करते हैं, देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, कि क्या चल रहा है अभी मार्केट में। तो ये है, कभी कभी मैम मुझे लगता है कि आप ही की तरह मैं भी बोलना शुरू कर देंगे मॉनिटरिंग। ठीक है, मेरे मुंह से अभी निकलने वाला था। खैर, तो ये हो गया आपका environmental appraisal. And before Naman begins his presentation, let me going to represent by Abhishek and expansion by myself, retrenchment by Akhil, and lastly combination by Shivam. I would like to call Abhishek to explain stability strategy. Good afternoon, everyone. My name is Sheikh Kumar, and I am here to explain stability strategy. One of the important goals of the business enterprise is stability, to safeguard its existing interest and strength, to pursue well-established and tested objective to continue the chosen business path, to maintain operation efficiency on a sustained basis, to consolidate the commanding position already reached, and to optimize return on the resources committed in the business. A stability strategy is pursued by a firm when it continues to serve in the same or a similar market and deal in same or similar product and service. And the strategic decision focus on incremental improvement of function performance. A stability strategy is not a do-nothing strategy. It involves keeping track of new development, of ensure that the strategy continue to make sense. The strategy is typical for those firms whose product have reached the maturity stage of the product life cycle. Smaller organizations may also follow the stability strategy to consolidate their market position and prepare for the launch of the growth strategy. Now the characteristics of the stability strategy. It does not need much of the fresh investment and अभिषेक अपना बस हेडफोन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्लियरिटी नहीं है आवाज में, थोड़ा नजदीक कर लीजिए। 1 minute. Now the characteristic of a stability strategy. First, it does not need much of the fresh investment. Second is the risk is also less, and it is a commonly employed strategy. A stability strategy does not involve a redefined definition of the business of the corporation. And last characteristic of stability strategy is it involves minor improvement in the product and packaging. Now, major reason for a stability strategy is a product has reached the maturity stage of the product life cycle. It is less risky or it is involved less changes. The staff feel comfortable with things as they are.
The environment phase is a relatively stable. Expansion may perceived as being threatening, and consolidation is sought through stabilizing after a period of rapid expansion. Thank you. For next topic, next topic was discussed by Naman. Thank you, Abhishek. Please change the slide. Now, the expansion strategy. Expansion strategy is basically the enlargement of scope of a business, increase in the investment, and trying to enter into new product or product line or a market. There are few factors of its expansion strategy that are first, development of business, increasement in the scope of business. It is also highly versatile because it's required a lots of combination and permutation of strategy before we implement it. Now, the major reason of the growth is are like the demand of the first, the demand of the goods and services. Second, the strategic satisfaction means the strategists feel more satisfied when the company growth or when they expand. And the last one is the control market. It helps to control over the market by suppressing their rivals. Now, the expansion strategy has been categorized into few categories. First of all is expansion through diversification. Next slide. It is further divided into intensification. Next slide, please. Abhishek, slide change. First one is intensification, and it is categorized into three parts: market penetration, market development, and product development. Market penetration is like it's only focused on the existing market and the existing product. And market development is a development of the existing market by adding some more few channels of distribution. And third one is product development, which is modification of the existing one product to enhance their more capabilities and or the reach. Next. What is product development, Aman? Product development is product development, ma'am. It is the modification of the existing one. Product new or market new? Product new or market new means, ma'am? Which one is new? Means according to you, both are existing. Ma'am, existing product. नहीं होता ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट हमेशा नया रहता है, एग्जिस्टिंग मार्केट रहता है, ठीक है. और मार्केट डेवलपमेंट में भी मार्केट विल बी न्यू एंड प्रोडक्ट विल बी existing. Okay, ma'am. Okay. Second one is diversification. Diversification is the extent of business, whether it is related or not relating to the present market or the products. First one, they are also categorized into four different categories. First, vertical integrated, horizontal integrated, concentric, and conglomerate. Vertical integrated. It is related to the existing firm, remains vertically with the same process sequence, move forward and backward in the chain, and enter a specific product or steps that will announce into the market. Second one is horizontal integrated diversification. The acquisition of similar operating and similar operation at the same stage of production and marketing chain. Now, the third one is concentric diversification. It is a new business linked to the existing one through process, technology, or the marketing. And the last one is conglomerate diversification. There is no linkage between the new one and the old one. Means there is no connection at all. They are not even related to the each one. Next. And next type. Okay, ma'am. And please include many as much example, not many, तो at least one example is required. आप याद करिए अपने क्लास का लेक्चर में सब में एक एग्जांपल पुट किया. We are running very fast. ठीक है, टाइम नहीं हम लोग दूसरा क्लास देंगे, ऐसे थोड़ी कि टाइम नहीं मिलेगा. प्रेजेंटेशन को थोड़ी खराब करना है. ठीक है, put example. I want example. Better you explain from expansion part from next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप एक्सपेंशन पार्ट से एक्सप्लेनेशन देंगे. ठीक है, प्लीज पुट एग्जांपल, ऐड सम एग्जांपल, एटलीस्ट वन एग्जांपल इज रिक्वायर्ड.
ऑलराइट, हम्म, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल मस्ट है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग में तो बच गए, इन्वायरमेंटल अप्रेजल वगैरह में। स्कैनिंग ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी तुरंत लास्ट स्लाइड करिए, मूव करिए, इस स्लाइड में जाइए। अभिषेक स्लाइड हाँ, एक लास्ट स्लाइड which he explained right now. 1 minute. डाइवर्सिफिकेशन वाला। यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन में अब यहाँ देखिए हर जगह मैंने एग्जाम्पल दिया है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में याद करिए कॉफी वाला एग्जाम्पल, याद करिए कोका कोला, जो कोका कोला बनाती है बॉटल, ठीक है, मार्केटिंग वो वाला एग्जाम्पल याद है यस ना। आप कुछ और एग्जाम्पल सोचिए। हॉरिजॉन्टल में हम लोग किए थे, जैसे कोका कोला वाला अगर पेप्सी के साथ मर्ज कर जाए, या ब्रुकबॉर्न और लिप्टन मर्ज कर गए, है ना। ब्रुकबॉर्न दोनों टी मैन्युफैक्चरिंग ही है ना। कोसेंट्रिक में एक ही टाइप का मतलब बस प्रोसेसिंग चेंज हो जाएगा। मतलब दूध बनाने वाले अब पेड़ा भी बना रहे हैं, चीज भी बना रहे हैं, पनीर भी बना रहे हैं, ठीक है। आप इमेजिन करिए ये सब अगर उसमें पुट करेंगे तो प्रेजेंटेशन कितना मतलब अच्छा होगा, हेल्दी होगा। कॉन्ग्लोमरेट में मैंने जियो का एग्जांपल दिया था। जियो पहले टेलीकॉम में था, फिर अभी रिटेल में आ गया है, कंप्लीटली अनरिलेटेड, ठीक है। तो लाइवली बनेगा आपका ये सारा एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, तो थिंक ऑफ सम एग्जांपल, एटलीस्ट वन एग्जांपल, और ज्यादा इफेक्टिव होगा। बाकी आप लोग का प्रेजेंटेशन तो लास्ट क्लास मतलब लास्ट सेमेस्टर में तो देखा हुआ है ही, एक्सप्लेनेशन पावर में कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो बस एग्जांपल उसमें ऐड कर दीजिए। ऑलराइट,